आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इसका टाइटल है इटालियन एम्बेसडर ईट्स ओनली इंडियन फूड फॉर 24 आवर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या खाया उन्होंने, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Ciao Baia. The ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. Melody. The meme is all over the internet. They ask me when your prime minister come back here. What is one Hindi word that you use a lot? Dhanyavad, fir milenge. I actually love taking the tuk-tuk, so It's really one of the most exciting experience to travel in the city in India. This is a small dosa. Your favorite Bollywood star? Amitabh Bachchan, मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है. मुझे नींबू पानी बहुत पसंद है। अच्छा होता है ना? Hey नाम बहुत everyone, मुश्किल है। Giulia here. Today is a very special day because we have the pleasure to have the ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. Vincenzo, it's nice seeing you. My pleasure. Today we're gonna go around Delhi and have street food, and I'm gonna ask him some questions because 4.5 years of mandate are coming to an end. Let's go and have chai. Yeah. What is a morning without starting with chai? Let's go. Absolutely. Because it's gonna be about street food. First question, ambassador, your favorite street food in India? Samosa, definitely. He actually asked me like, are we not gonna get samosa? So we sorted that out, but yeah, samosa. Like everyone, when you have a chai, you chit chat, you ask ठीक है, fun बन मस्का। questions. So what लग is your रहा है। favorite Bollywood star? I would say Amitabh Bachchan. He's an historical star from Bollywood. But I like also the ancient Indian movie director that is Satyajit Ray Wow. from Kolkata. Satyajit And I Ray. like also Mira Nair and the last production of Slumdog Billionaire, whose script was made by the former Indian diplomat Vikas Swarup, that is a very good friend of mine. Oh wow. And what is one Hindi word that you use a lot throughout your daily life here in India? Dhanyavad. Dhanyavad. And what do you think is one dish in India that resembles a dish in Italy? When I have street food in India, I remember when I was in Italy. Pane e panelle, pizza, pizza fritta, croquet, arancini, all fried. Yes, Right all here. fried. Samosa is fried, pane e panelle is fried, That's true. pizza is fried, in That's Naples at least. It's time to try another street food, actually the favorite of the ambassador. We decided to take the tuk-tuk because why not? We are here in Delhi, let's take it. So let's go. Ciao Baia. I actually personally love taking the tuk-tuk because there is like a nice breeze coming. Exactly. So it's really one of beautiful. the most exciting experience when you have to travel in the city in India. Of course, in the city. In the meantime, we're gonna ask the ambassador some questions because you might not know that the tuk-tuk has some relationship with Italy. Yes, we have some Italian tuk-tuk, the Piaggio electric tuk-tuk. Piaggio produced here in India, make in India by Italy. And they are based out of Pune, right? In Pune, Maharashtra. What is like one story that has connected you so much here in India and Nepal? There was a great challenge when we experienced COVID in India and Nepal. And on that occasion, we experienced great solidarity. And we experienced also a great level of collaboration at the level of the Ministry of Health, also launching some research project to prevent the pandemic. Yeah, So it was an exactly. experience of friendship, of very close collaboration, and I cannot forget that period. Yeah, of course. So we are heading to get a samosa for the ambassador. That's his favorite street food, so we should totally get It's it. definitely my favorite street food. So how are you gonna do it With now that you- potato, green pea, fried of course, and Yeah. some spice. Yes, Because a little- without spice there is no Indian food. And there is also no life, right? And no life. Exactly. Dhanyavad, fir milenge. Dhanyavad. So we are at the Tamil Nadu Yes. house. We're gonna make the वाओ, ambassador कितना order. खूबसूरत था ना। मुझे पहले लगा Dosa शायद or samosa ऑफिस है। or मुझे भी लगा था। nimbupani. This is your favorite street food, so I really want you to try it and tell us what you think. Best way to start a morning here in Delhi. And it has this like little kick of spice at the end. Exactly. What is your experience with spicy food here? I like a lot spicy food. When the food is well prepared, you can at the same time taste the spice and taste the ingredient. This is the case for samosa. Oh, wow. This Dosa. is what, 1 meter? This is a small dosa.
For starting very light breakfast or continue the breakfast, you see here in India we eat not so much, just a small dosa after a very good samosa. I think this is one of the commonalities that we have, right? Exactly. When you go to a family lunch or like a family dinner in Italy, there is no way you can leave the table without having a full stomach, like a full tummy, right? Absolutely. And that's the same here. Like, I think food, equally in Italy and in India, food is love. So the more they love you, the more food. Because we are both generous people. That's we want true. to share food. In Naples, you have a big pizza called ruota di carretto, that is a char wheel that go beyond dish, like this dosa. So let's try the dosa. It's at the same time crispy but also soft. Very Yes, good. exactly. With this. Yes. How is it? Buonissima, buonissima. हलवा है बीच में Buonissima. Italy and India have one thing in common. Those are like hand gestures. What would be one hand gesture from Italy that you would like to show the audience that is watching this video that you think they should learn? In southern Italy, when you do like that, means what do you want? Okay. But in the Arab world, this same gesture means please wait. And in India, we know that when you do like that, it's okay. Yes. But if you do like that in Italy, means maybe no. That's actually true. What are other commonalities that the two cultures have? Because, you know, I'm married to Shrey, who is behind the camera, and a lot of people ask me, have you had any cultural shock or any cultural surprises? And I always say no. I have a feeling that the two countries are so similar culturally. But what is There it? is a high degree of empathy, natural empathy in India and in Italy. The important role of family in the organization, but also another important communality between Italy and India is creativity, because we are two creative people. If you see the creativity of the ancient India and the creativity of the Roman period, today fashion and design in India and Italy are outstanding and very well known all over the world. And linked with the creativity, there is a sense of entrepreneurship, because in Italy we have 4,500,000 enterprises. That means one enterprise out of 11 Italians. And in India also we have millions of companies, startup. This is another similarities in the economic community between Italy and India. Yeah. So food, culture, enterprise, family, innovation, creativity. This is the best drink in India. Nimbu pani. Nimbu means lemon, pani means water. Water. As simple as that. Mujhe nimbu pani bahut pasand hai. Ooh! I think what maybe people also do not know here in India is that we do use chilies too. Specifically the chilies from Calabria. Chilies from Calabria that is spicy and is very good. And we do chili oil, so sometimes we put the chili oil on top of the pasta or the pizza. Exactly, exactly. So that's another thing that we have in common. Wow, this is art. Cheers. Yes! Namaste, namaste. Who is preparing dosa? Really good dosa. Top dosa. Congratulations. Dhanyavad everybody. Good job, thank you. Dosa, bahut acha. Ambassador, this is a really hot moment and the bond between the two countries, Italy and India, is becoming stronger and stronger. What is your view on पीछे this? staff And होगा। what do you think the future looks like? You are right. We are now reached the top level of our relation between Italy and India. We launched the so-called strategic partnership last year with two summits between Prime Minister Modi and Prime Minister Meloni here in Delhi. And also we have signed a lot of agreement in terms of defense, space, mobility. Mobility is very important because now we'll have more and more students and workers from India to Italy. Italy with India signed the first mobility agreement all over the world. Wow. This is the importance of this relationship. So, Melody, the meme is all over the internet. Whenever I go in India, they ask me when your Prime Minister come back here. Because there was a two very successful meeting last year in March and in September. And on the social media, there was a hashtag Melody, Meloni plus Modi. Yes, I Successful, I think would say. exactly. Extreme popularity. So we are really waiting for Georgia to come back again. The tradition that I think could become very popular in India is caffè sospeso. In Naples, you go to a bar, many people do this. They pay their own coffee and they pay another coffee for whoever come after. No matter young, old, rich, poor, caffè sospeso. Coffee is paid by me for the next client. Hello, good morning. One coffee and un caffè sospeso. One coffee for the next client. Thank you.
After 4.5 years, what is one fond memory that you have? India enters my heart in terms of human relation, friendship, in terms of cultural experience, in terms of diversity, in terms of food, in terms of diversity of landscape all over India, from the mountain Himalaya up to Kerala and the tropical states in the southern India. What is one thing that you're gonna miss about India? I miss this humanity. I miss this capacity and this attitude from the Indian side as well as from the Italian side, because in this we are quite similar. To become friends, to attach great importance to the human dimension, the relations with people and friends, and all the experience we have always had very great hospitality all over India. It's time to end our video, Ambassador. Unfortunately. Yes, it was a pleasure to have you. What would be one thing you would like to take with you, and how would you like to close this video? Since my departure will be in the coming months, I can tell you that I will keep so many friends here in India forever, and I will come back here, and I will hope to receive in Italy my friends from India. Yes, absolutely. I'm pretty sure that India will always have a great memory of you, and they will always be happy to welcome you back. Thanks again for Dhanyavad. your time. Dhanyavad. Grazie mille. Hope you like this Grazie. video. As always, click the like button, subscribe to the channel, and we'll see you next time. Bye. भाई वैसे तो मुझे लगता है कि भाई किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने मुल्क के एम्बेसडर के साथ घूमना जो है ना, मेरा ख्याल है किसी डिलाइट से कम नहीं होगा। बिल्कुल। इससे पहले हम लोगों ने जूलिया को देखा था, जो इटालियन डिप्लोमेट थे, उनके साथ उन्होंने वीडियो बनाई थी और हम लोगों ने वो वीडियो भी देखी थी। आज हम लोग एम्बेसडर के साथ देख रहे हैं। ओके, बहुत जल्द वो जो हैं वो इंडिया से चले जाएंगे, रिटायर हो रहे होंगे या उनकी जो है ड्यूटी किसी और कंट्री में लग रही होगी। लेकिन ये है कि वो मिस करेंगे इस चीज़ को। बट ये है कि इन बिटवीन जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी और जो उनकी एक रूटीन का हिस्सा है खाने पीने से रिलेटेड, वो आज हम लोगों को इस वीडियो में देखने को मिली, तो अच्छा लगा। समोसा जो मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट सबको पसंद आ जाता है, और डोसा भी। हाँ, डोसा भी सबको पसंद आता है, लेकिन इतना बड़ा डोसा खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कौन सा सारा खाया गया होगा, आई नो, बट मैं वैसे बात कर रही हूँ जो लोग मंगवाते हैं, डेफिनेटली लोग खाते हैं, फैमिलीज आकर खाती होंगी ना एक साथ। अच्छा, वैसे वो तमिलनाडु हाउस जो है, मुझे पहले शायद लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए ना, वहाँ की फुटेज जो है वो आपको देखने को मिली थी, मुझे लगा शायद कहीं एम्बेसी के जो है ना वो अंदर है, लेकिन यार मुझे लगा तमिलनाडु हाउस भी जो है, ये भी पूछना मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आम इंसान की भी असेस है कि सिर्फ एम्बेसडर्स को या बड़े बड़े जो आपको डिप्लोमेट वगैरह देखने को मिलते हैं उनको असेस होगी? क्योंकि जिस तरह का एक स्ट्रक्चर वो बना हुआ था ना, हाँ, उससे ये लग रहा था कि शायद वीआईपी जो है ना गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग टाइप आपको लग रही थी। हाँ, और ये भी लग रहा था क्योंकि ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे बाहर। ज्यादा लोग एक अलग चीज है आपको, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे आपको जो है पटियाला हाउस जो है वो देखने को मिलता है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में नाम जो होते हैं जो आप है बिल्कुल है लाहौर में आपको देखने को मिलता है। तो उसी तरह मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे तमिलनाडु हाउस जो है, मतलब पटियाला हाउस में क्या होता है मुझे नहीं पता, बताओ ना हमारे व्यूअर्स को। यार एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट की ही बिल्डिंग है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी नहीं पता। अब मौसम से मैं बाद में इसका सर खाऊंगी कि चलो इसके बारे में जानो, ताकि मुझे फिर किसी से पूछ के बताना पड़ेगा इन्हें आपको। लेकिन ये कि जैसे वो टुक टुक में बैठे, फिर जो सिमिलैरिटीज हैं उन्होंने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सिमिलैरिटीज की बात करें ना, तो शायद दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा जिसकी सिमिलैरिटीज़ इंडिया में नहीं होंगी कल्चरल वाइज। क्योंकि अगर हम लोग देखें, सनातन धर्म एक ऐसा मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वी नो इट्स नॉट अ रिलीजन, बट आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, चाहे वो पहनावे में हो, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो, चाहे वो खाने पीने में हो, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो सनातन धर्म से नजर आता है। मैं ये कहूँगा कि टाइम के साथ साथ जो है, जैसे 1947 से पहले की बात करें तो डिफरेंट जो है आपको कंट्रीज़ की तरफ से जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको इन्वेजन देखने को मिली। तो अगर उस चीज़ को भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना कल्चर यहाँ पर लेकर आए, मिक्सअप हुए, कुछ चीज़ें लोगों ने अडॉप्ट की, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उन लोगों ने अडॉप्ट की। तो मेरा ख्याल है इसी तरह जो है ना सिमिलैरिटीज़ और ब्यूटीफुल कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। फिर अगर वैसे हम लोग देखें तो हम लोग लाइक अगर जो डिफरेंट गॉड्स हैं, हाँ, उनको देखें तो मतलब डिफरेंट रिलीजन में तो कहीं ना कहीं पर वो जो अगर आप देख लो तो एक कनेक्शन जो है वो आपको सनातन धर्म से उनका मिलता हुआ नजर आता है, चाहे नाम चेंज हो जाए या फिर सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं। जो रिचुअल्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है
कि वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को कि वी हैव सिमिलैरिटीज़, ठीक है, कल्चरल वाइज बात कर लें, क्रिएटिविटी के लिहाज से बात कर लें, बट प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं करते। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है बाकी सारी कंट्रीज, और आई थिंक इससे आपके रिलेशन और ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और वो चीज़ हमें अब नज़र भी आती है, मतलब इंडिया के इटली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, आपको अच्छा खासा जो है रिलेशन नज़र आता है। फिर उसके बाद जैसे बीच में जो है उन्होंने खुद जो है एक कल्चर एक्सचेंज की बात की, जिसमें स्टूडेंट्स को लेकर उन्होंने बात की, तो मोबिलिटी की बात की उन्होंने। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहती है हर कंट्री के लिए, क्योंकि जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं, पढ़ कर आते हैं, तो नो डाउट कुछ लोग उधर ही सेटल हो जाते हैं, तो देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कंट्रीज का बेनिफिट हो रहा होता है। अभी बल्कि मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी कि इंडियंस के लिए ई वीज़ा जापान के लिए मिल रहा है, तो मतलब आप ये देखो कि आज के टाइम में हर देश इंडियंस को अपने कंट्री में इनवाइट कर रहा है। इवन जैसे हम लोग जो टूरिस्ट कंट्रीज हैं उनको देखते हैं, वो वीज़ा फ्री मतलब कर रहे हैं इंडियंस के लिए। सो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने अच्छे हैं, आपकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है, आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर बिल्कुल करता है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो हम लोग हमेशा अक्सर वीडियो में बात करते हैं कि बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम लोगों ने पहले जापान के एम्बेसडर उनकी वीडियोज़ देखी, फिर उसके बाद अब हम लोग इटली के एम्बेसडर की वीडियो देख रहे हैं, मतलब कितना फ्रीली वो वॉक करते हैं और हर जगह जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब होती है ना, तो फिर आपको जो है फिर इस तरह साउंड एनवायरनमेंट आपको मिलता है। एक मोमेंट में भी हो सकता है उनके पास जो है वो पुलिस वाले हों या उनका जो है एक पूरा जो टीम होती है वो हो, लेकिन नजर तो नहीं आई। हाँ, नजर नहीं, लेकिन जो है ना मोमेंट जो थी उनकी, जैसे वो टुक टुक में बैठकर जो है वो जा रहे थे और वो जो है एक जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं उनके पास खड़े होकर खा रहे थे, तो ये एक फ्रीली मूवमेंट जो होती है ना उसका रियलाइज होना मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई डिप्लोमेट हो, आम बंदा हो, वो बहुत इजीली मतलब उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं उसको हर टाइम एक प्रोटोकॉल में ही रहना है फिर ही वो कहीं बाहर जा सकता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो वो कैसे बोले मीम वाली बात उन्होंने बीच में की, मीम वाली अच्छा मीम वाली, मैं नीम वाली कौन सी हो सकती है, लगता रोज़ा लग रहा है ज़्यादा, जैसे मुझे लग रहा था पहले मीम वाली बात उन्होंने की, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो चर्चा में रहा है। और आई थिंक सिर्फ वो इंडिया तक महदूद नहीं है, वो पूरी दुनिया तक वो मतलब वो मीम उसके बाद काफी ज्यादा आपको जो है मीम्स उस पे जो है वो देखने को भी मिले थे। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ मेरे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।